So last class we studied the concepts of rotation, revolution, seasons, time zones, international date line, daylight saving time, Milankovitch cycles. So any doubts from here in these concepts? Studied what is solar day, sidereal day, why the difference, linear speed of rotation, how it is used by rockets. Okay, so why the rockets are launched closest to the equator. Seasons, different seasons, what changes during seasons, intensity of sunlight and length of the day, how it varies due to the tilted axis of the Earth's rotation, which remain fixed during the entire period of revolution around the sun. Okay, it's because of this we have the 4 seasons, and also polar day, polar night, overhead sun, all these phenomena. Time zone is a zone with uniform standard time, uniform time across the entire zone, and time changes by 60 minutes for every 15 degrees. That is the general standard. Okay, so usually every country is divided into multiple time zones based on this. So some of the countries follow single, some of the countries follow multiple. Okay, so the different time zones. Did we try to calculate local time? We did that problem solving. We did that, right? Local time of different places. Yes or no? No. What is the time in Toronto? What is the time in? No, we did not do that problem. So if at all you are given a reference, let's say time in India is 12 o'clock. What is the time in another latitude which follows so and so? Did we do that? No. कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है, करते हैं. Multiple time zones, daylight saving time, Milankovitch cycle. Okay, so all these things we saw. So any doubts? It's all clear. So let's try to solve the problem related to time zones. So to calculate the local time, what do we need exactly? What is the data required? Longitude, whatever the longitude which they are following. For example, India follows 82.5 degree east longitude as a reference. Right? If the time here is 5 p.m., what is the time in London? 11:30 a.m. समझ आया? When I say 82.5 degree, that means it is from Greenwich, it is at a distance of 82.5 degree. 1 degree
the time changes by 4 minutes. Okay, for every 1 degree, time changes by 4 minutes. 82.5 degree into 4 कर लो कितना हुआ 330 minutes. 330 minutes का मतलब 5 hours 30 minutes. So the time difference between Mirzapur and London is 5.5 hours. 5.5 hours. From here you want to calculate, you want to go behind. Moving towards the west, you will subtract the time. West low subtraction. Right? So from 5 p.m. reduce 5:30, we're at 11:30. Right? Simple. Chalo. Calculate the time at Toronto, which follows 77.5 degree west. If the local time at Mirzapur is 6 p.m. Mirzapur time is 6 p.m. What is the local time in Toronto? Which follows 77.5 degree west. Okay, so let's see others. What is the time? सबका हो गया? All of you got it? So online students, you can give your answers in the response portal. What is the time at Toronto if the local time at Mirzapur is 6 p.m.? हो गया सबका? See, calculate the time difference between any two places. First, calculate the difference of longitude. Just calculate the difference of longitude first. You get the difference of longitude, you just multiply by 4, you'll get the time difference. What is the longitudinal difference between Mirzapur and Toronto? What is the longitude of Mirzapur? 82.5 degree east. इसका मतलब from Greenwich it is at 82.5 degrees.
Toronto, it is 77.5 degree west. From Greenwich, it is at 77.5. So what is the distance between Mirzapur and Toronto in terms of longitude? 82.5 plus 77.5. Okay, दोनों को ऐड करो कितना हुआ? 160. 160 degrees is the longitudinal distance between Mirzapur and Toronto. Longitudinal difference is 160. Time difference is 160 into 4 minutes. That is 640 minutes. 640 minutes is the time difference. So 640 minutes convert into hours, 10 hours, 40 minutes. Okay, so 10 hours, 40 minutes is the time difference. And Mirzapur is ahead, Toronto is behind. Mirzapur 6 p.m. Come back. You need to reduce by 10 hours, 40 minutes. If you reduce by 10 hours from 6 p.m., you are at 8 a.m. Reduce by 40 minutes more, you are at 7:20 a.m. Okay? So it's 7:20 a.m. at Toronto. So like this, first calculate the time longitudinal difference into 4 कर लो, time difference हो जाएगा. We have few online queries. Which topics to read from ICSE textbook? ICSE 10 standard. So you have to read the topics related to resources, mineral energy resources, agriculture, industries, transportation. Okay, these units you will have to read them from ICSE. Eccentricity concept. ठीक है. Eccentricity तो बहुत easy है देखो. Eccentricity refers to the amount of distortion which is present in the orbital shape when compared to a perfect circle. Okay, so if this is a perfect circle, that means there is no eccentricity. Okay, so this is slightly higher eccentricity. Eccentricity is the amount of distortion, amount of enlargement, amount of you can say overall shape ये कितना खींचते जा रहे हैं. This is higher eccentricity. This is much more higher eccentricity. Can you see? Eccentricity is increasing. In this has the highest eccentricity. This has the least eccentricity. जो अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन, उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है. दिस इज नॉट फिक्स्ड. इट वेरीज फ्रॉम ए वेरी हाई एक्सेंट्रिसिटी टू वेरी लो एक्सेंट्रिसिटी. ऑफकोर्स इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, सो जो भी होगा बहुत माइन्यूट में ही होता है, बट it goes to the maximum and comes back to the minimum and again goes to maximum and again comes back to minimum. Like this it is continuously changing. Okay, so जैसे रबर बैंड जैसे ऐसा खींचो, okay, छोड़ो, खींचो, छोड़ो, ऐसा. Okay, the orbital shape is continuously changing. That cycle of eccentricity will take 1 lakh years. One cycle of eccentricity. Okay, so उसकी वजह से of course the amount of sunlight will vary. Insolation will get impacted, seasons will get impacted. Let's move on to the next topic, universe and origin of universe. What is universe? Limitless expanse of space around us. That includes, is it just the space? Can we call the space as universe? खाली स्पेस है तो यूनिवर्स बोलेंगे हम. यूनिवर्स इंक्लूड्स व्हाट? प्लैनेट, स्टार्स, डार्क मैटर. व्हाट अबाउट एनर्जी? Along with these bodies there is also energy. All these bodies are basically made up of matter. Okay, so everything is made up of matter only, whether it is Earth, Moon, Jupiter, Sun, or asteroids. Okay, anything.
You go to another planet, another satellite, or another solar system, another galaxy, कहीं पे भी जाओ, basically matter. It's only matter. Along with matter, there's energy in all different possible forms, right? In all different possible forms, it takes different shape, different structure, different bodies are formed because of this, the combination of matter and energy in various different ways. Along with that, there is also something which we don't know about yet. Okay, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं अभी तक। तो हमने सोचा था ठीक है, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्पेस, मैटर एंड एनर्जी, यही तो होना चाहिए। हाँ वही है, एंटी मैटर भी है। अभी रिसेंटली पता चल रहा है और बहुत कुछ है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। नाम डार्क इसलिए रखा है कि पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट इट, इट्स वेरी डार्क, बट बेसिक डिफरेंस तो पता है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बेसिक डिफरेंस क्या है? डार्क मैटर हैज अ टेंडेंसी ऑफ पुल, डार्क एनर्जी हैज अ टेंडेंसी ऑफ पुश। एनर्जी मैटर का जो बेसिक डिफरेंस है, मैटर always has a tendency of pull, right? The gravity. Energy has a tendency of expansion. Pull. All the known matter and known energy is just 5% of the universe. Known matter, known energy is just 5% of the universe. 25% is dark matter, 70% is dark energy. इनके बारे में हमें पता भी नहीं है एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। Okay, so this is present in a limitless expanse of space. Okay, so what is the overall limit of the universe? कुछ आइडिया ही नहीं। That's why we call it as limitless expanse of space. Okay, so we are located on the planet Earth. India, Asian continent, planet Earth. हमारे लिए यही बहुत बड़ा है। The distance between the sun and earth itself is so huge. Light takes 8 minutes to reach. Light is the fastest we know. Light also takes 8 minutes. इतना distance है between the sun and earth. Imagine the distance between the sun and the outermost planet, outermost part of the solar system. Okay, planet भी छोड़ो, सबसे पीछे चले जाते हैं। Outermost part of the solar system. कितना दूर हो सकता है? How big is solar system? कितना बड़ा होगा? If this board is the solar system, imagine sun is here. Sun is much smaller than this dot. If this is the solar system, sun becomes an invisible point. Sun is invisible point. Light के वजह से वो presence दिखेगा बस. Okay, so that big is solar system. Okay, solar system का distance measure करना है. In the solar system, the distance is measured in terms of astronomical units, AU. What is 1 AU? Is the distance between the sun and earth. Sun and earth के बीच में जो distance है ना, उसको हम बोलते हैं 1 astronomical unit. The last point of the solar system is at 50,000 AU. 50,000 AU is the last point of the solar system. Oort cloud. Okay, just a Oort cloud. That big is solar system. The humanity has just reached moon. मून तक जाके वापस आ गए, फिर प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया क्योंकि बहुत महंगा था. Okay, so we'll never be able to reach the other part of the solar system in our lifetime. Maximum अगर एलोन मस्क सक्सेस हो गया तो मार्स तक जाएंगे, मतलब ह्यूमैनिटी. Okay, so that is just solar system. What about next star? Who is the neighbor star? Neighbor star कौन है? Who is the neighbor star to sun? Proxima Centauri. Proxima Centauri is the next star, just immediate next star. Okay, so solar system का एक रफ आइडिया मिला. अभी इसका आइडिया देता हूँ. देखो, next star. Let's say
You want to go to the Proxima Centauri, next star है, शायद वहाँ पर भी planets हो सकते हैं, life भी हो सकता है. Let's say from today you leave the earth with the best possible technology. Elon Musk का बहुत अच्छा वाला हमने rocket लेके निकल गया मान लो, with unlimited resource supply. Just imagine there's an unlimited resource supply to you, you can live. Okay, so inside that rocket I said, it will take 25,000 years to reach that star. 25,000 years is the time you need to reach the next star. Okay, just sun के बगल में है. Now imagine how big the Milky Way galaxy is. Milky Way galaxy has 100 to 400 billion stars. $100 to 400 billion stars. एक स्टार से दूसरे स्टार जाने का जो टाइम है ना वो 25,000 years है. How big the Milky Way galaxy is unimaginable for us. सोच भी नहीं सकते हो. Okay, so we will never be able to leave solar system. हम मून तक ही गए हैं, सोलर सिस्टम छोड़ो, नेक्स्ट स्टार छोड़ो, मिल्की वे गैलेक्सी तो भूल ही जाओ. Unless somebody brings the technology to bend the space. Okay, वर्म होल लेके आ गया तो कोई तो तब होगा शायद कोई बना दिया वर्म होल. So this is one galaxy. How many galaxies are there in the universe? 100 to 400 billion galaxies. 100 to 400 billion galaxies are there in the universe, with each galaxy containing 100 to 400 billion stars, and sun is just one among them. Okay, तो उनमें से एक छोटा सा planet हमारा है. ठीक है, so this is the universe which is known to us, जो हमें पता है. फिर मल्टीवर्स तो भूल ही जाओ. ओके, वो वाला कॉन्सेप्ट हम बात भी नहीं करना है अभी. The universe as we know is made up of 100 to 400 billion galaxies with 100 to 400 billion stars. Huge space. Okay, so we are just limited by time, limited by technology. Okay, so we are so much shortage of technology. We are like, we'll never be able to see any other aliens. हमारे पास technology है ही नहीं. We'll never be able to cross this space barrier. Space is a huge barrier in the cosmos, in the universe. Okay, तो वही सबसे बड़ा barrier है हमारे लिए. उसके लिए चाहिए technology. We are not that advanced in terms of, so the beings. So if at all we develop a better technology, then we will be able to see the actual extent of universe. Okay, we will understand maybe more about the universe. Okay, so recently जो हमने James Webb telescope लेके आए थे, we brought this James Webb telescope instead of Hubble telescope. Okay, so and वो सबसे latest technology है, उसको देख के ऐसे देख के हमारा दिमाग फट जाएगा ऐसे. Okay, so have you seen the images of James Webb telescope? So one particular image, which is this is one of the earliest images. This particular image. This is the image. When James Webb telescope was installed in the space, one of the earliest images which was taken. So when this image was released, people were like totally going mad seeing this image. ऐसा क्या है इसमें? This is the image of night sky. Night sky में जो sky दिखता है ना, उसका image है. If you take one grain sand, okay, one grain sand उठा लो, hold it between two fingers,
hold it at arm's length distance. At this distance, if you hold, the gap if you find between these two fingers, that gap is expanded as this image. That gap, उस gap में नाइट स्काई कितना ही देख सकते हो आप. ओके, तो इस इतना सा गैप में नाइट स्काई कितना ही दिख जाएगा हमें स्टार भी नहीं दिखेगा. जेम्स वेब टेलीस्कोप कैन सी दिस मच. ओके, एंड इन दिस व्हाटएवर द बॉडी विच इज नॉट ट्विंकलिंग, जो ट्विंकल नहीं कर रहा है ना, उसको छोड़ के बाकी सारा खुद एक गैलेक्सी है. इसके अंदर एक एक बॉडी एक एक गैलेक्सी है with 100 to 400 billion stars. This is the latest technology which can show it to us. Imagine if we develop at least this much of vision. इतना जेम्स वेब टेलीस्कोप का विजन हमें मिल गया तो नाइट स्काई कैसे दिखेगा. Okay, so night sky is like totally filled with every dot in the night sky will, like you can see a galaxy over there. It is there. वो हम नहीं देख पाएंगे. And we are not able to see it. And each galaxy को अंदर जाके zoom in कर लो, आपको 100 to 400 billion stars दिखेगा. इतना छोटा dots without any space. तो ये है हमारा universe. But universe is like unimaginable in terms of space, in terms of numbers, in terms of matter. Is unimaginable for us. We are totally limited. We're totally limited by technology as well as space. Just the glimpse you can see about the universe. So, do you think life is present only on the earth? Definitely not. Okay, it's not like life is present only on the earth. There's definitely life in different parts of the universe, because if you believe in evolutionary theory, it believes that life evolved on the earth. Okay, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी जगह से आ गया, यहाँ से रहना शुरू कर लिया. नहीं, जो भी अर्थ के ऊपर लाइफ है यहीं पे ऊपर एवॉल्व हुआ है. एटम बाय एटम मर्ज होके कंपाउंड्स बनते हुए, सेल बनते हुए एवॉल्व हुआ है. बिकॉज अर्थ प्रोवाइडेड दैट कंडीशंस. ओके, सो इफ अर्थ कैन प्रोवाइड दैट कंडीशन, अर्थ इज जस्ट वन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द सन. Okay, so the universe is filled with many galaxies and many stars, many planets. So definitely there would be many such possibilities, many such planets which can host life. Okay, definitely it would have been there. Fine. It's just limited by the time and space. We'll not be able to see. And we don't have the technology to go there. But do they have the technology to come near to us? That is the question. Okay, so if they are intelligent enough to break this space barrier, so of course, okay, so the advanced beings, okay, so who can go beyond the 3 dimensions, multi-dimensions, okay, understand the barrier of space, उसको bend कैसे करना है, ये सब चीज़ें उनको अगर पता है तो शायद they will be able to come to the earth. But if at all they are so intelligent, they will not come to earth, okay, near to human beings particularly. Okay, तो गलती से आ भी गया तो वे वहीं से देख के भाग जाएंगे. Okay, so the way we are living on the earth. Okay, so creating pollution, climate change, global warming, everything. Okay, तो उसको देख के वहीं से भाग जाएंगे, वापस नहीं आएंगे. ठीक है. So let's talk about the origin of universe. So talking about the origin of universe, there are different theories to explain the origin of universe. Okay, so modern theories. Of course, the ancient theories are many more religious or cultural theories. बहुत सारा ऐसा है. Okay, so modern theories. So we have the steady state theory. Who proposed steady state theory? Fred Hoyle. Fred Hoyle proposed steady state theory. Okay, so next one, pulsating theory. Pulsating theory was proposed by Arthur Eddington. Big Bang theory was proposed by Georges Lemaitre.
Okay, so just a rough idea. Three important theories: steady state theory, pulsating theory, Big Bang theory. We all know about Big Bang theory, at least to some extent. हमें पता है Big Bang theory. Okay, so let's understand the other two very briefly. क्या exactly क्या बोलता है? So Big Bang theory का original name है expanding universe theory. It is this expanding universe theory which has an idea कि universe expands continuously. It is even now it is expanding. अभी भी expand होते ही जा रहा है. ठीक है? That is what is Big Bang theory. The steady state theory is exactly opposite of Big Bang theory. It is exactly opposite of Big Bang theory. Steady state theory says that the universe is in a total steady state. There is no change in the mass, there is no change in the size. Size भी same जितना है उतना ही रहेगा, mass उसके अंदर जितना है उतना ही रहेगा. Okay, it's always in a steady state. And there was no beginning to the universe, there will not be any end to the universe. No beginning, no end. It is always constant. Okay, जैसे हिंदू इसमें बोलता है ना आदि ना अंत. Okay, steady state. ठीक है, तो ये पूरा बिग बैंग के लिए ऑपोजिट है, क्योंकि बिग बैंग बोलता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स एगो द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड. बिग बैंग हुआ था, उसके वजह से ओरिजिनेट हुआ था, तो वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड होते जा रहे हैं. द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग इन साइज. एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना. देयर इज नो बिगिनिंग, नो एंड, एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज इन ए कांस्टेंट स्टेट. ओके, सो सेम साइज, सेम मास all the time. Pulsating theory says that universe goes in continuous cycles of expansion and contraction. Okay, it starts from a very single point, very small point. वो explode होके expand होना शुरू होता है. Explosion causes the expansion. Okay, universe continuously expands and reaches its maximum size. Once it comes to the maximum size, and then it continuously contracts and becomes the least. सबसे लीस्ट हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वहां से फिर दोबारा एक्सपेंशन होना शुरू होगा. इट गोज इन कंटिन्यूअस साइकिल्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. द एक्सपेंशन इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बिग बैंग. द एक्सपेंशन हैपेंस ड्यू टू द बिग बैंग. ओके, ऐसे पूरा ऐसे एक्सप्लोड होके एक्सपेंशन होना शुरू होगा. वंस इट रीचेस इट्स मैक्सिमम साइज, जो एक्सपेंशन का एनर्जी खत्म हो गया ना, देन द ग्रेविटी विल ओवरटेक. ग्रेविटी विल स्टार्ट टू कॉज द big crunch. Big crunch is contraction. Big bang, big crunch. Okay, फिर contract होते जाएगा, continuously contract होते होते होते, it will become a single point. Okay, so like this it goes in a continuous cycles. That is what is pulsating theory. Pulsating theory was given by Arthur Eddington. Then comes Big Bang theory. So Big Bang theory was proposed by Georges Lemaitre, as suggested by Georges Lemaitre in 1927. When it was proposed, it was called as expanding universe theory. ठीक है? So what exactly is the idea of expanding universe theory? Georges Lemaitre says that all the matter, all the energy which is present in the universe right now was concentrated in a single point. There was just a single point which was known as singularity. The entire universe was just a single point. All the matter, all the energy. When I say all the matter, all the energy is concentrated in a single point, okay, you cannot imagine there is a empty space in that there is a single point. No, there is no space also. There is no space. Can you imagine this? It's not empty space.
there is no space. Except the single point, there is nothing in the universe, literally nothing in the universe. There is no other matter, no other energy, okay, no other space. There are no forces of physics, there is no gravity, there is no nuclear force, nothing. Okay, so there was only singularity here. That was the universe around 13.7 billion years ago. Around 13.7 billion years ago, there was nothing in the universe except the singularity. And all the mass, all the energy in the universe was concentrated here in the singularity. 100 to 400 billion galaxies, with each of them containing 100 to 400 billion stars concentrated in a single point of few millimeters. Imagine the density of that point, imagine the overall temperature. It was infinite dense and infinitely hot. There was no space. Space भी नहीं था. And whatever the universe came, it came from here. क्योंकि जब पहली बार बताएंगे लोगों को लगता है कहानी तो बहुत अच्छा है सर, भी हो सकता है क्या. People did not believe this theory long time. So for a long time they did not believe this theory. So फिर बहुत सारे evidences आए, फिर लोग इसको believe करना शुरू किया. This singularity underwent a cosmic explosion. The singularity underwent a cosmic explosion. That explosion was so violent. Okay, it released huge amount of energy. The explosion was so violent, it released huge amount of energy. And the explosion, first thing, what is created by this explosion? Space. The explosion creates space. First thing, it has to be space, right? So because whenever there is an explosion, आप movies में देखा होगा, हमारा Bollywood movie में, okay, या South Indian movies में, कि जब बहुत बड़ा सा बम फटता है, लोग ऐसे उड़ के बाहर जाता है ऐसे. क्यों होता है ऐसा? शॉक वेव्स. सच में होता है? होता है. The shock waves, right? The explosion was so violent that it expands the space. ये जो point था वो expand होना शुरू हुआ था. It was such a rapid expansion that within a short period of time, how much short? 10 to the power minus 30 seconds. 10 to the power minus 30 seconds of time के अंदर universe expanded into few 100 billion light years. 100 billion light years. Light year is the distance traveled by light in 1 year. एक साल में जितना distance travel कर सकता है. The distance between the sun and earth is 8 minutes. 1 year का distance कितना हो सकता है? 100 billion light years का distance कितना हो सकता है? That much of space was created in a time period of 10 to the power minus 30 seconds. That was the nature of explosion. The explosion was so violent. This violent explosion caused the expansion of space. Energy fills the space. A very high energy radiations fills the space. खाली energy है, matter नहीं है, है ना? So there was no matter, there was no atoms here. Energy, it's just made up of various different type of particles. Okay, so energy is particles, right? Gradually, the temperature of this space will start to decrease because the heat is being lost continuously. As the heat is being lost continuously, the energy will start to decrease. The temperature will start to decrease. जैसे जैसे initially तो बहुत high temperature था, तो जैसे जैसे temperature decrease होना शुरू हुआ, at slightly lower temperature, a particular field comes into picture. In that particular field, a particular type of massless particles, because initially everything was massless, there was no mass. A particular type of massless particles will gain mass now. थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइप का फील्ड आता है, उस फील्ड के अंदर these massless particles will gain mass. एक बार मास आ गया तो काम खत्म हो गया, तब कुछ इजी है अभी. Why? Mass attracts mass. There is a gravity. Gravity has come into force. Gravity आ गया, two mass particles will attach together because of the mass. Subatomic particles बनेगा. Subatomic particles merge together to form atom. Two atoms come together to form molecules.
Now molecules, different molecules attract each other, they form gaseous clouds. Initially जो भी atom था, they are all the lightest atoms, that is mainly hydrogen and helium. पूरा gaseous clouds बन गया. From these gaseous clouds, the stars will originate. Okay, so वो कैसे वो देखते हैं. From the gaseous clouds, stars originate. Around the stars, planet will come into force, come into picture. That is how the universe comes into existence. In the meantime, this space is continuously expanding. The explosion, which happened around 13.7 billion years ago, that explosion is still causing it to undergo expansion. The universe is continuously expanding. It is expanding even today. Okay, so in fact, none of these pictures are true. ऐसे हम imagine नहीं कर सकते because universe is not like a plane. प्लेन तो नहीं, यूनिवर्स इज लाइक मैक्सिमम हम इमेजिन कर सकते हैं 3 डायमेंशन. एटलीस्ट 3 डायमेंशन तो इमेजिन कर सकते हैं. देयर इज मल्टी डायमेंशन. लेकिन 3 डायमेंशन इमेजिन करो, ऐसे गोल जैसे इमेजिन कर लो यूनिवर्स. बलून, बड़ा सा बलून जैसे इमेजिन करो. ठीक, तो वो कंटिन्यूसली बड़ा होते जा रहे हैं. इट इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर. वो बलून एक्सपेरिमेंट है ना 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में. So there is a balloon experiment. Have you read this? So you take a balloon and mark some points on that balloon and inflate the balloon. As the balloon becomes bigger and bigger, these points start to move away from each other. Universe is expanding like this. So that means the space between the different stars and galaxies, they are continuously increasing. That is the idea of expanding universe theory. ये जो idea Georges Lemaitre gave in 1927, nobody believed by then. He just published the paper, फिर चुप हो गया था. Okay, so nobody gave him any kind of recognition, just the idea. It was in 1930, Hubble comes out with something more phenomenal observation. तब ये फेमस होता है. तब भी ये पूरा recognition नहीं मिलेगा. ये सच में हो सकता है क्या? ये आइडिया हमेशा के लिए रह जाता है. 1960s में somebody discovers some evidence, then they start to work seriously on this. Okay, then they start to believe. In 2010s, finally they understand how the massless particles can gain mass. Okay, so how these massless particles, ये crucial link. मास आ गया तो easy है. फिजिक्स तो पूरा एस्टैब्लिश कर लिया वो कैसे होता है. ओके, सो वो इनिशियली मासलेस था. मास कैसे आ गया? How mass came into force? From energy only. The energy particles will get converted into mass. उसको समझना था. वो तो आइंस्टीन बहुत पहले बोल दिया है, E is equal to mc square. Okay, so उसका actual nature हमें समझ नहीं आया था. How exactly these massless particles will gain mass? Okay, so तब तो आइंस्टीन E is equal to mc square तो समझ के हमने एटम बम बना दिया था. Okay, so energy is equal to mass. मास के अंदर एनर्जी छुपा है तो उसको थोड़ा एनर्जी निकल के आएगा तो बम बन गया. Because या दो एटम को मर्ज कर दो, मास will be lost in that process. That mass will come out of energy. But how exactly it happens? वही था experiments of LHC, Large Hadron Collider. Okay, so by CERN, CERN. Okay, they made a initially they made a small tunnel. एक छोटा सा टनल बनाया था. In that tunnel, using particle accelerator. Using particle accelerator, you will accelerate the subatomic particles. इसको accelerate करोगे, वो continuously ऐसे घूमता ही रहेगा. जितना वो घूमेगा उतना ज़्यादा speed में घूमता ही रहेगा. Okay, they continuously increases its speed. Okay, so एक level के बाद में इतना high energy, इतना high speed में चलता है. Okay, so in that high speed, it creates a particular field and it gets converted into mass. ये पता करना था उनको सच में होगा या नहीं होगा. Basically they wanted to replicate the conditions existed immediately after Big Bang. उस टाइम में ये हाई एनर्जी था, उसी की वजह से वो फील्ड क्रिएट हुआ था एंड जिसकी वजह से मासलेस पार्टिकल्स हैड गेन्ड मास. उन्होंने पहले छोटा टनल बनाया, फिर थोड़ा सा बड़ा टनल बनाया, फिर बहुत बड़ा सा टनल बनाया. They made a very big tunnel, circular tunnel. Okay, so underground tunnel, disturbance कम होना चाहिए. So below the border of Switzerland and France, स्विट्जरलैंड बॉर्डर के बीच में. Okay, तो वहाँ पर बहुत बड़ा सा टनल बनाया था. जब इतना बड़ा टनल बनाया था, लोग को पीपल गॉट अफ्रेड.
इन लोगों ने इतना तेज एक्सेलरेट करेंगे कि दोबारा बिग बैंग हो जाएगा. पीपल वर अफ्रेड. ओके, फिर इन लोगों ने कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है ऐसे बोल के एक्सपेरिमेंट कर ही दिया. They were able to finally come to a conclusion. They were able to prove that. They were able to recreate the exact conditions which were prevalent immediately after the Big Bang and how these massless particles would gain mass. These massless particles which gains mass, they are called as the boson particles. And the field, Higgs field, okay, it's called as Higgs boson, which are called as God particles. Why God particles? इसी के वजह से मास एग्जिस्टेंस में आ गया ना. अगर ये नहीं है तो मास कैसे आता? मास नहीं है तो यूनिवर्स कहाँ से आएगा? खाली स्पेस एंड एनर्जी होता. They would not have been any matter. Therefore, they are called as God particles. They recreated and they got Nobel for that. Nobel भी मिला था उनके लिए. अभी उससे भी बड़ा टनल बना रहे हैं. इस बार तो सच में करके छोड़ेंगे. नहीं, अभी आएंगे, रुकिए, कहानी है अभी. स्टार का फॉर्मेशन भी बात नहीं किया अभी. ठीक है. सो दिस आइडिया इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बिग बैंग थियरी. सो 1927 में ये बंदा इतना बताया था, कोई सुना नहीं. फिर 1930 में आके हबल बताता है. ओके, इट वाज इन 1930. हबल थ्रू हिज ऑब्जर्वेशंस गिव्स a very famous, implication, like inference. What is Hubble's inference? Hubble said that the space between the galaxies and stars, it is continuously expanding. All the stars and galaxies from us, they are continuously moving away from each other. This is his observation. ठीक है? It is continuously moving away from each other. How did he come to a conclusion? By continuously observing the stars. If you observe the stars, if you observe any light source for that matter, okay, so light comes in a particular wavelength. एक particular wavelength में आता है ना light. If the light source is stationary, अगर ये light source है and this is your position, ये आपका position है, ये light source है. If light source is stationary, its temperature is same, the wavelength at which it is emitting the light, that wavelength is always constant. वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, एक ही वेवलेंथ में लाइट आएगा. अगर वेवलेंथ सेम है तो कलर भी सेम होगा. वेवलेंथ के ऊपर कलर डिसाइड होता है. शॉर्टर वेवलेंथ वायलेट, ब्लू. लॉन्गर वेवलेंथ ऑरेंज, रेड. ओके, सो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ आपको कलर मिलेगा रेड कलर, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मिलेगा वायलेट ब्लू कलर. जो भी लाइट जो भी आ रहा है, इफ द बॉडी इज स्टेशनरी, द वेवलेंथ इज सेम, द कलर ऑफ दैट लाइट इज ऑलवेज सेम. ओके, सो इफ द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स यू, लाइट एमिटिंग बॉडी है, इट स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स यू. इफ दिस बॉडी स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स यू, द वेवलेंथ विल स्टार्ट टू डिक्रीज. इस लाइट का जो वेवलेंथ है ना, वो डिक्रीज होते जाएगा. सोर्स में चेंज नहीं है, टेम्परेचर में चेंज नहीं है, बस the distance between the source and you is decreasing. The wavelength starts to decrease, and if the wavelength starts to decrease, the light starts to become bluer. ये ब्लू होते जाएगा, मतलब ग्रेजुअली. देखो, अगर ग्रीन है तो ग्रीन से लाइट ब्लू डार्क ब्लू से वायलेट, ऐसे चेंज होते जाएगा. The color of the light will start to shift towards the blue end of the spectrum. This is what is called as the blue shift. If some light source is continuously, its color is changing. If the color of the light is becoming bluer and bluer, it is undergoing blue shift. What do you mean by that? The body is moving towards you. If the same body starts to move away from you, the wavelength is increasing. If the wavelength increases, the color becomes red. So it is undergoing red shift. ये red shift होते जा रहा है. If the body moves towards you, it undergoes blue shift. If the body moves away from you, it undergoes red shift, light emitting source. That's a Doppler effect है. Any sound producing body, if it moves towards you, the intensity of sound increases. If it moves away from you, the intensity of sound decreases. So Hubble was continuously observing all the stars in the universe,
and he always observed red shift. He never observed blue shift in any of the stars. That means all the stars are continuously moving away from us. If all the stars are continuously moving away from us, that means that these stars are undergoing red shift. He never observes blue shift. Based on this observation, he comes to conclusion that all the bodies in the universe are continuously moving away from us, as well as not only away from us, they are also moving away from each other. तभी तो ये phenomena हो सकता है. कोई भी direction में जाओ, how is it possible that they are moving away from us? That means basically the entire space is expanding. Not only that, he is able to calculate the rate at which the universe is expanding. That is what is called as Hubble's constant. Okay, so he calculates the rate at which the universe is expanding, which is called as Hubble's constant. So this was published in 1930 by Hubble. फिर जैसे हबल ने बोल दिया, दैट मीन्स इट विल चेंज द एंटायर फिजिक्स का ओवरऑल बेसिक आइडिया है उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया, बिकॉज स्टिल देन वी वर थिंकिंग दैट द यूनिवर्स वाज कंप्लीटली स्टैटिक यूनिवर्स का आइडिया था. ओके, सो वी वर हैविंग स्टैटिक यूनिवर्स, मतलब इट्स नॉट एक्सपैंडिंग, पूरा स्टेबल स्टैटिक यूनिवर्स था. ओके, इंक्लूडिंग आइंस्टीन, एवरीवन वर बिलीविंग इन स्टैटिक यूनिवर्स ओनली. जैसे हबल का थियरी आ गया, देन एवरीवन स्टार्टेड टू इनकॉर्पोरेट दिस डायनामिक यूनिवर्स. फिर तब आया था हमारा जॉर्ज मैत्री, बोला देखो मैंने तब भी बोला था, कोई सुना नहीं मेरा. तो फिर अपना पेपर निकाल के दिखाया, देखो 1927 में पब्लिश किया, बिफोर हबल ओनली. देन पीपल काउंटर्ड व्हाट इज द प्रूफ दैट बिग बैंग हैड हैपेंड. एक बिग बैंग के अलावा भी हो सकता है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, है ना. तो कारण तो बहुत हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. बिकॉज स्टडी स्टेट में भी यही बोलता है कि द स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर मूविंग अवे, ऐसा भी बोलता है वो, इवन दो इट ही गिव्स द आइडिया ऑफ स्टडी स्टेट. ओके, सो दे कुड नॉट जस्टिफाई दिस. ठीक है. So that was Hubble's idea. But however, Hubble and Big Bang theory perfectly fits with each other. Hubble's idea is everything is moving away. Big Bang theory says that Big Bang had happened and that is the reason behind this expansion. Now Big Bang had happened, उसको proof चाहिए था हमें, वो आएगा बहुत आगे, around 1960s. Out of purely in an accidental manner, we discover the proof behind the Big Bang. That is cosmic microwave background, CMB radiation. So what is this CMB radiation? It was in 1960s. In America, there were two amateur radio astronomers. Radio astronomers, they observe the space through radio waves, by collecting radio waves. They had an antenna, which is a receiver. They're trying to collect a particular frequency radio waves. Okay, so they were doing these experiments. ऐसे कॉलेज से बाहर आए, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डेजर्ट में जाके, ओपन एरिया में जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. Okay, so whatever the experiment they were trying to do, उनका लक भी देखो ऐसे. They wanted to catch a particular frequency of radio waves. Particular wavelength में पकड़ना था. They are trying to catch in a particular wavelength, but they always used to receive some background noise. They used to receive some background noise. Okay, उनको पकड़ना था एक particular frequency में, but हमेशा background में कुछ noise. जैसे ये जो केबल टीवी का बैकग्राउंड नॉइस आता है ना, अगर केबल डिस्कनेक्ट हो गया तो बैकग्राउंड नॉइस आता है, ऐसे वाला. दे थॉट मे बी इन दिस डायरेक्शन देयर इज अ इशू, दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ एंटेना हियर, यहाँ पर या वहाँ पर दूर लेके गया. ओके, तो छोड़ो आज, छोड़ो कल आते हैं, कल कोशिश किया, परसों कोशिश किया, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दे आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन. इन दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ दे ऑलवेज रिसीव बैकग्राउंड नॉइस.
इनफैक्ट उनका ऐसा था जहाँ पर एंटेना रखा था ना, तो वो उसके ऊपर एक मतलब एक पिजन का नेस्ट था। कि दे थॉट पिजन ने कुछ छेड़छाड़ कर दिया कि इसको भगाना है बोल के, तो उसको भगाने की कोशिश किया, वो नहीं जा रहा था, उसको मार भी दिया। They also killed the pigeon. फिर भी ये नहीं हो रहा है, they're trying to do every possible thing. They thought now finally they came to a conclusion there is antenna का ही कुछ प्रॉब्लम है. They take this antenna to a local professor. वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में, so they take the antenna to the professor. एंड प्रोफेसर को एक्सप्लेन करते हैं हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया है, इस वेवलेंथ में ये हम रिलीज करने का मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है. द प्रोफेसर विल गो मैड. Okay, so he's like, what I am trying to do from for the entire lifetime, you have done this through this experiment. And this is the proof of Big Bang. ये Big Bang का proof है. Okay, so professor explain करता है वो कैसे proof है, उनको समझ भी नहीं आएगा ये. Okay, so they are totally like out of, है ना, तो ये तो समझ से बाहर है. But इनको उनको ये तो समझ आ गया कि ये तो कुछ तो phenomenal discovery कर लिया है. So they will make a paper out of this and they will publish this paper. Okay, so 10 years later, they get Nobel Prize for this paper. The radiation which they discovered is what is called as the cosmic microwave background. The cosmic microwave background is a radiation which is the result of Big Bang. Big Bang जब हुआ था, Big Bang के वजह से immediately after the Big Bang, the high temperature had released this radiation. इस radiation तब release हुआ था. That time it was a very high energy radiation, but this radiation, as it has filled the entire space, as the space is expanding, this radiation is also expanding. बहुत high energy radiation space के अंदर fill हो गया. Now if you expand the space, what happens to the radiation? The radiation also, its wavelength gets increased, right? This radiation is continuously undergoing redshift. ये continuously redshift होते जा रहा है. It started originally as a very high radiation, फिर continuously change होते जा रहे, X rays, gamma rays, UV rays, visible rays, IR rays, radio waves and micro. अभी micro में है ये, micro फिर radio आएगा. Okay, अभी micro में, microwave में है. Okay, in a particular wavelength, you try to catch, you will find this signal. Not only on the earth, you go to any part of the universe, you will find the signal. It is like a universal signal. पूरा हर जगह में है. It has filled the entire universe. You go to moon, you will find this. You go to sun, you will find this. You go to another galaxy, you will find this. Intergalaxy, you will find this. Every space of the universe is filled with this radiation. That radiation is what is called as cosmic microwave background. The entire space has a background radiation in the microwave range. Light source was the Big Bang. वो होके रेडिएशन रिलीज कर दिया है, पूरा स्पेस में है. स्पेस एक्सपैंड करने से वो रेडिएशन भी एक्सपैंड होते जा रहे हैं. बस ये मूवमेंट की वजह से नहीं है, मतलब वो स्पेस एक्सपैंड होते जा रहा है ना. स्पेस एक्सपैंड करो तो रेडिएशन भी एक्सपैंड होगा. नो अदर प्रोसेस एक्सपेंस दिस. वो एक्सपेंशन होते जा रहा है ना, वो एक्सपेंशन होते जा रहा है. दैट मीन्स यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. एंड वो जिसका जो वो रेडिएशन रिलीज करने का जो प्रोसेस था वो बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन ही होना चाहिए. अगर अभी माइक्रोवेव में है तो इफ यू गो बैक इन टाइम कितना हाई एनर्जी हो सकता है, एंड वो बिग बैंग की वजह से ही हो सकता है. ओनली बिग बैंग कुड हैव प्रोड्यूस्ड दैट काइंड ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन. So that is cosmic microwave background. ठीक है. सो फिर वहां पर मैंने बताया था गैशियस क्लाउड्स बन जाते हैं, वहां से स्टार्स ओरिजिनेट होगा. वो कैसे होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, हाउ एग्जैक्टली स्टार्स आर ओरिजिनेटेड, द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार. गैशियस क्लाउड्स तो बन गया, वो कैसे बना था? एटम्स क्रिएट हुआ, एटम्स
will create molecules. Molecules, each molecule attract each other gravity की वजह से, फिर वो cloud बन जाएगा. Within the clouds, as the molecules collide with each other, the friction between the molecules releases heat. है ना? The friction between the molecules release heat. And now heat will energize the molecules again. When they collide, it releases heat. The heat will cause these molecules to energize, speed increases, they collide more frequently. The closer the particles, closer the matter, closer the atoms, more the collision. Like this, within the gaseous cloud, the continuous collision of these molecules, continuous collisions of atoms, increases the temperature over a long period of time. Okay, it happens over a long period of time. There's a huge gaseous cloud where the temperature is rising continuously. Heat is being produced continuously. These clouds are called as stellar nebula. Stellar nebula is mainly made up of only two type of atoms, hydrogen and helium. Hydrogen सबसे ज़्यादा होते हैं, helium भी होगा थोड़ा बहुत. ठीक है? Now what is happening inside the stellar nebula? The heat is continuously being released and the temperature is continuously rising. It will take billions of years for this process to happen. After a long period of time, the temperature at the core is sufficiently high to distinguish this entire region from the peripheral areas. Initially, it was just a gaseous cloud. After a long period of time, you can see a very clearly, very easily identifiable core. बहुत आसान से एक बॉडी बन जाएगा, वहां पर कोर अलग है, बाहर का पेरिफेरल एरिया अलग है. Core has a higher temperature than the surrounding area. A very easily identifiable core is developed. That body is what is called as protostar. So what is protostar? Protostar is a body which has evolved from the stellar nebula, okay, with a clearly identifiable core of high temperature. The temperature in the core is continuously increasing. When this temperature reaches a minimum of 15 million degrees Celsius, 15 million degrees Celsius temperature reach होना चाहिए core का. That is when we say it has resulted in the birth of a star. When the temperature of the core reaches 15 million degrees Celsius, we can call this body as a star. Why? What is a star? How do we define star? Star is a body with nuclear fusion reaction happening at its core, which is continuously producing light. Okay, not just any radiation, it's electromagnetic radiation produced from nuclear fusion reaction. Because any warm body can produce radiation. Okay, कोई भी radiation हम यहाँ पर नहीं मान सकते. It is a light, electromagnetic radiation, light produced from nuclear fusion reaction. For the nuclear fusion reaction to happen, you need a minimum of 15 million degrees Celsius of temperature. Only at that high temperature, two atoms can fuse together. दो atom fuse हो सकते हैं. Okay, they can merge into a single atom. Two atoms of hydrogen will merge into one atom of helium. In this process, some very minute amount of mass is lost. Okay, बहुत छोटा सा mass यहाँ पर गायब हो जाते हैं and वो आता है in the form of energy, because mass is equal to energy. Okay, very minute amount of mass is lost and that mass comes out in the form of energy and that energy is released. Imagine एक atom के अंदर इतना energy हो सकता है. Our universe is filled with atoms. कितना energy है? We just don't have the technology to harness the energy. Okay, atomic energy तो हम बोलते हैं, okay, तो वो बहुत मुश्किल है, start करना बहुत मुश्किल है. To attain this kind of fusion, you need this high temperature, 15 million degrees Celsius.
तब फ्यूजन रिएक्शन शुरू होगा एंड ये इतना हाई एनर्जी होगा इट विल ट्रिगर द फर्दर फ्यूजन रिएक्शन. एक एनर्जी मतलब एक दो एटम एक बार फ्यूज होके एनर्जी रिलीज हो गया तो वो फर्दर थाउजेंड्स ऑफ एटम्स को फ्यूज करेगा, इतना एनर्जी रिलीज हो सकता है. Then each of them will cause the release of thousands of energy which is capable of causing thousands of fusion reactions. Like this goes on in a chain reaction, continuously burning the fuel. What is the fuel? Hydrogen. Continuously burning the fuel to produce energy. That body is what is called as a star. हम बोलते हैं star. But this reaction cannot go on forever. Okay, so जब तक हाइड्रोजन है इसके अंदर तब तक होगा, as long as there is a hydrogen at the core. After some time the core will exhaust its hydrogen. But fusion reaction happens only at the core, remember, not in the entire body. Once the core exhausts its fuel, the fusion reaction starts to happen along the peripheral areas. जो पेरिफेरल एरियाज में होना शुरू हो जाता है, ओके, सो यहां से फ्यूजन रिएक्शन होना शुरू होता है. कोर में जो भी बचा है बहुत हाई एलिमेंट हेवी एलिमेंट्स का ही होगा, बिकॉज हीलियम से खत्म नहीं होता है. हीलियम विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म टू फर्दर हायर एलिमेंट्स. ओके, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है. हाइड्रोजन टू हीलियम, हीलियम टू फर्दर हाई एलिमेंट्स. सो कोर इज अ वेरी हेवी पार्ट. बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी इट इज कोलैप्सिंग. Okay, so पहले तो एनर्जी रिलीज हो रहा था ना, देयर वाज अ बैलेंस. नाउ देयर इज ओनली ग्रेविटी एंड ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन, कोलैप्स होते जा रहे हैं. whereas peripheral area is expanding because of release of energy. फ्यूजन रिएक्शन होके वो एक्सपैंड होने का कोशिश कर रहे हैं. बाहर से एक्सपेंशन है, अंदर से कॉन्ट्रैक्शन है. दिस इज अ अनस्टेबल बॉडी. दैट इज व्हाट इज रेड जॉइंट. इनिशियली जब एक लिमिट में कॉन्ट्रैक्शन चल रहे, बाहर का एक्सपेंशन बहुत हाई रेट में होगा ना, so जिसकी वजह से पूरा बॉडी बहुत बड़ा सा हो जाता है. फ्रॉम द स्टार इट बिकम्स ए वेरी वेरी बिग साइज्ड बॉडी. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेड जॉइंट. रेड जॉइंट इज अ वेरी बिग साइज्ड बॉडी. बहुत बड़ा साइज का होगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन सन बिकम्स रेड जॉइंट, okay, so it becomes so big that it will consume both Mercury as well as Venus. अर्थ के बहुत पास में आ जाएगा सन, इतना बड़ा हो जाएगा. ओके, अर्थ का फ्यूचर तो पता नहीं, not very clear whether it will get consumed or not. Red giant is such a big sized body, but it is unstable. There is a contraction. Okay, so rapid expansion, वो टेंशन की वजह से है ना, the entire body collapses. ऐसे collapse होके outer shell completely disintegrates. There is only inner core left. बहुत छोटा सा core बच जाएगा. Outer part is completely disintegrated. ये पूरा collapse हो गया. That is what is called as planetary nebula. Okay, red giant becomes planetary nebula. Now the planetary nebula, after some time the collapsed part will get removed. वो तो उसमें strength नहीं है ना, तो वो निकल जाएगा. फिर बचेगा only the inner core which is called as white dwarf. White dwarf is the leftover body from the planetary nebula. खाली core बचा है. एक अंदर से white light निकल के आ रहा है. It is continuously producing white light because of so some reactions which are still happening, just producing a very faint light. बहुत हल्का सा light release करते जा रहे हैं. After some time even that will also be stopped. वो भी बंद हो जाएगा. फिर बन जाएगा ये black dwarf. Black dwarf is not visible because it is completely black. There is no light coming out of black dwarf. Human beings have not discovered any black dwarf. हमने तो discover नहीं किया.
This is the life cycle of a normal star. What is a normal star? Any star which is having a mass less than 10 times the sun का 10 times size तक normal star है. मतलब sun is 1s, up to 10s it is called as normal star. It is less than 10s. More than 10s, it becomes a massive star. मतलब 10 टाइम्स द सन तक ये नॉर्मल स्टार है. मतलब सन कितना छोटा स्टार है इमेजिन कर लो. सन इज ए, ऑफ कोर्स सन इज ए नॉर्मल स्टार. सन इज ए ड्वार्फ स्टार, not even normal star. Up to 10 times the sun, it takes this cycle and ends up being white dwarf and black dwarf. If it is more than 10 times the sun, it ends up being a massive star, very very big size star. Massive stars तो बहुत बहुत बड़ा है. 10 times, 100 times, 1000 times, 10,000 times of sun. इतना बड़ा हो जाता है कि उसके सामने sun becomes invisible. They can become so big that sun is nearly invisible. When this massive star becomes a red giant, it is not called as a red giant, rather it is called as a red supergiant. बहुत बड़ा सा red giant. It's called as red supergiant. The tension in the body of red supergiant is so high that it will not easily collapse like this. इतना easily तो collapse नहीं होगा, rather it explodes. That violent explosion of red supergiant is what is called as supernova. Every massive star becomes a red supergiant. Every red supergiant undergoes supernova explosion. Supernova is a very very violent explosion. One of the most violent explosion which we have observed in the universe. The most violent explosion, because we have not observed Big Bang. Big Bang तो नहीं observe किया है हमने. Supernova becomes so violent, it releases so much of energy. If it happens, you can see it even during the daytime. Daytime में भी दिखेगा. Daytime में sun के अलावा और कुछ नहीं दिखता है ना. अगर supernova है तो देख सकते हो. At a moment, a supernova is so violent, मतलब इतना intense explosion है ना. At a moment, it releases so much of energy, which is equal to the energy released by the entire galaxy in which it is happening. मतलब one supernova releases the energy equal to 100 to 400 billion stars. एक मोमेंट में 100 बिलियन स्टार्स अगर रख के कितना एनर्जी रिलीज कर सकते हो, उतना एनर्जी एक ही सुपरनोवा रिलीज कर सकता है. इट इज सो वायलेंट. सुपरनोवा हो गया तो खत्म हो गया. कहीं पे भी लाइफ, आसपास में लाइफ है तो खत्म हो जाएगा. इट इज सो वायलेंट. अगर प्रॉक्सिमा सेंटारी मान लो सुपरनोवा हो गया, इट अंडरवेंट सुपरनोवा एक्सप्लोजन. ओके, सो ऑफ कोर्स द लाइफ ऑन द अर्थ विल कम टू एन एंड. ये तो विदाउट डाउट, तो बहुत पास में है ना. बट व्हेन? इमीडिएटली? If Proxima Centauri undergoes supernova explosion today only the life will come to an end. That is the speed in which we travel. What is the speed? What is the time taken by the light to reach from Proxima Centauri to Earth or Sun? 4.3 years. 4.3 light year is the distance between the Sun and Proxima Centauri. So that light released from the supernova will take 4.3 years to reach. आज सुपरनोवा हुआ तो 4.3 इयर्स के बाद में अर्थ के ऊपर लाइफ खत्म हो जाएगा. उतना तो टाइम लगेगा ना वहां से लाइट आने में यहां तक.
तो मतलब we have 4.3 years to escape from the earth? No. Because who will tell us that it has underwent supernova? What we are seeing Proxima Centauri today was the light which was released 4.3 years ago only, right? वो सुपरनोवा वाला लाइट आने के लिए 4.3 इयर्स लगेगा, तभी हमें पता चला अच्छा सुपरनोवा हुआ है, जैसे हमें पता चला तभी खत्म. Okay, so nobody can travel faster than light, right? That is supernova. Supernova is such a violent explosion, but there are so many massive stars in the universe. Even after supernova, also it is still remaining. The body, उसके अंदर जो body core है ना, वो अभी भी बचा है. It is still remaining. If it is still remaining, it becomes a neutron star. If the leftover core is between 1.4 to 3 times the mass of sun, जो बचा है वो भी 1.4 to 3 times the mass of sun हो सकता है. Imagine कितना बड़ा हो सकता है original star. If the leftover core is between 1.4 times to 3 times the mass of sun, it becomes a neutron star. Neutron star is a body of very closely packed neutrons. Closely, इतना closely and इतना densely packed neutrons है. Very very heavy body. बहुत छोटा सा space में वो सारा ऐसे merge हो गया. मतलब it is closely packed in such a small space. न्यूट्रॉन स्टार इतना हेवी वेट का होता है. इफ यू टेक 1 spoon of matter from the neutron star, 1 spoon teaspoon of matter, I'm saying 1 spoon of matter will be equal to 500 billion kgs. That is what is neutron star. Imagine बहुत छोटा सा बॉडी है, 3 times the sun is packed in that. इतना dense हो सकता है. उससे भी dense होगा हमारा black hole. If it is more than 3 times the mass of sun is left after supernova, it becomes a black hole. What is a black hole? Black hole is not a hole. Don't imagine like a hole. Black hole is a body. It is the name of the body. इसके अंदर एक body है. The leftover body from the supernova. But this leftover body has a mass greater than the 3 times the sun. And this mass is concentrated in a single point. इतना छोटा सा point में ये concentrated है. Imagine the gravity, a very high amount of gravity, right? A very high amount of gravity. It is so high that even the light which is coming out of it is not able to come out. It is not letting the light to escape. That body is what is called as a black hole. Okay, so it is literally black because even the light is not coming out. इसको हम बोलते हैं black hole. The body which is there at the center of the black hole is what is called as singularity. इसका भी नाम समझेंगे, singularity रख दिया क्योंकि we don't have any other name. Because this body has an infinite density and infinite gravity. कुछ hypothesis भी है, इसके अंदर singularity भी Big Bang हो सकता है. मतलब each black hole can result in a Big Bang ऐसे. Hypothesis है, कोई proof नहीं है. Till recently we had no proof for the existence of black hole. It was just hypothesized. Einstein had spoken about black holes. Stephen Hawking had spoken about black holes. Very recently we captured the picture of a black hole. We were able to capture the picture of black hole. Okay, इतना easy नहीं है तो ऐसे कैमरा से नहीं खींचते उसको. Okay, so you have to receive the radiation, continuously radiation receive करना है उस body से, फिर उसको map करना है, कहाँ से किस point से निकल के आया है, ऐसे map करना है. Okay, so the data they collected for 2 to 3 years over continuous observation across different parts of the world. Then they compiled the data, then they were able to map. Okay, उसको फिर image बनाना था. Finally they were able to do that. Okay, so black hole का image तो निकाल दिया. This is life cycle of any star.
आई हैव गिवन यू द मेजर बॉडीज ओनली. इसके अलावा और कुछ बॉडीज है इसके बीच में. फॉर एग्जांपल पल्सार. पल्सार सुना है? ए वेरी स्ट्रांगली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज व्हाट इज कॉल्ड एज पल्सार. बहुत स्पीड में चलता है, बहुत स्पीड में घूमता है. ऐसे न्यूज़ में आएगा, कुछ और चीज़ें न्यूज़ में आएगा, ऐड कर लेना. जस्ट गिवन यू रफ आइडिया. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक. So let's talk about stars and galaxies. So what is a galaxy? Galaxy क्या होता है? Yes. क्या होता है? Just a group of stars. Stars के अलावा स्टार तो एक ही बॉडी है. Just one type of body. We just studied this. Yes, all type of bodies. Okay, so including the gaseous clouds, nebula, okay, black holes, red giants, neutron stars. Okay, so dark matter, dark energy, right? So all of these present together as a sprawling system. Okay, तो ऐसे फैलते हुए एक सिस्टम, एक बड़ा सा सिस्टम. इट इज़ नॉट नेसेसरी इट हैज़ टू बी लाइक ए हॉरिजॉन्टल डिस्क शेप होना. तो ये ऐसे गोल शेप भी हो सकते हैं, elongated elliptical हो सकते हैं, जैसे irregular हो सकते हैं. That system is what is called as a galaxy. Why they are held together as a single body? Gravity. Gravity of a supermassive black hole. A supermassive black hole will be there at the center of every galaxy. Okay, that gravity of this black hole holds all the bodies together. The gravity of supermassive black hole holds all the bodies of the galaxy together as a single system. So the way Milky Way is our galaxy. Milky Way has what is the name of supermassive black hole at the center of Milky Way? इसका नाम क्या था? Sagittarius. Yeah. Sagittarius A. Sagittarius A. Sagittarius A is the name of supermassive black hole at the center of this center of Milky Way galaxy. So basically the way planets and other bodies revolve around the sun, the stars revolve around this Milky Way. Revolves around the Milky Way galaxy with this black hole at the center. It's basically they are revolving around this black hole, supermassive black hole. Okay, it's a very very big sized black hole, इसलिए नाम है supermassive black hole. उसके ग्रेविटी की वजह से वो पूरा एक सिस्टम जैसे बनता है. एंड सन इज कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड इट लाइट. इसी को हम बोलते हैं गैलेक्टिक मोशन. द सन मूव्स अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी with Sagittarius A at the center. As the sun moves, what happens to the earth? Earth also follows. So basically earth is also moving around the Milky Way galaxy. Okay, that is the third motion of the earth: rotation, revolution and galactic motion. Talking about the types of galaxy, we have elliptical galaxy. Okay, so spherical shape, oval shape, okay, elliptical, ऐसे uniformly distribute होता है elliptical. Disc shape या spiral shape is spiral galaxy. साइड से देखो डिस्क जैसे दिखेगा,
ऊपर से देखो ऐसे स्पाइरल के स्पाइरलिंग सिस्टम के मिल्की वे इज स्पाइरल गैलेक्सी and the third one is irregular galaxy. No regular shape, irregular galaxy. This is our Milky Way galaxy. You have seen the pictures. You can see in the night sky if you are lucky. For that you have to be out of Delhi, any other place with light pollution. Okay, so night sky में कुछ जगह में दिखता है. Okay, so mountainous area, high elevated mountainous area where there is no light pollution, where there is no air pollution, dust particles ज़्यादा नहीं है, where the sky is clear, you will see this Milky Way galaxy. Okay, so how is it possible that you are inside Milky Way galaxy still you are capable of seeing this? Because of its nature. मतलब स्पाइरल गैलेक्सी है ना, ये पूरा एक ऐसा बड़ा सा बैंड है, इसका आधा पार्ट दिखेगा कभी कभी. ऑफकोर्स ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट तो इसके नीचे है ना. इफ द ओरिएंटेशन इज सच दैट सरफेस के लिए ऐसे 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 हो सकता है, तो यू कैन सी दैट. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट यू विल सी. इट अपेयर्स लाइक ए वाइट पैच इन द स्काई. द वाइट पैच जैसे दिखता है. That is why the name Milky Way. Okay, Akash Ganga, Milky Way. In that one of the star is Sun. Okay, so a spiral galaxy will have multiple spirals, bands. Okay, so in one of the band in which the Sun is located, इसका नाम है Orion. Orion is the name of the band. जिसके अंदर सन है, जिसके अंदर प्रॉक्सिमा सेंटोरी है और सीरियस भी है. यू नो सीरियस, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज सीरियस. Okay, so Sirius is located at 8.4 light years. Okay, पास में है वो भी. 8.6 लाइट ईयर्स. ये सारा मिल्की वे के अंदर ही है. मिल्की वे का सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी. यू कैन सी इन द नाइट स्काई लाइक a small patch, you will be able to see it. Okay, so if you get a chance to see Milky Way galaxy, okay, this is how you see the Milky Way galaxy. ऐसे एक छोटा सा पैच जैसे दिखता है. ये भी बहुत थोड़ा बहुत जूम करके दिखाया है, अदरवाइज एक छोटा सा ऐसे पैच, स्मॉल पैच. नाइट स्काई में ऐसे ऐसे. थोड़ा सा एक्सपैंड करो, जूम इन करो, यूज ए telescope or a binocular, you can very clearly see that. Okay, that is also a spiraling galaxy. That is Andromeda galaxy. Andromeda galaxy is apparently moving towards Milky Way galaxy, and both of them are going to collide in the future. After 7 billion years in the future, both the galaxies will merge together and becomes much bigger galaxy. Okay, so will it result in the collision of stars inside the galaxies? No. Okay, it is highly unlikely. Even when two galaxies collide with each other, it is highly unlikely two stars will collide with each other, because there is so much of space in it. एक गैलेक्सी के अंदर इतना स्पेस है ना, उसके अंदर एक और गैलेक्सी हम फिट कर सकते हैं. Okay, so for example, दो स्टार का मैंने बताया, सन एंड प्रॉक्सिमा सेंटारी, बगल वाला स्टार है, इसके बीच में 4.3 लाइट ईयर्स का स्पेस है. Okay, so there's so much of space inside the galaxy. When even if you merge two galaxies, it will not result in collision. Okay, it is highly unlikely that two stars will collide. There's so much of space. दोनों को ऐसे exactly fit करके बड़ा सा galaxy बना सकते हो. Of course, it will influence each other. Their movement gets influenced, their path gets distributed, the way the pattern of distribution, all of this gets influenced. But there are highly rare chances. Okay, so talking about the different phenomena, we know about twinkling of stars. Okay, I told you even in that image also, what is not twinkling, that is not a star. Twinkle karta hai star, right? Why?
why only stars twinkle? So if they're at very far distance, what happens? Refraction. Why? Okay, so there is a body which is very far and that light has to pass through the layer of atmosphere. It undergoes refraction. If there is any other body, let's say there's Jupiter nearby, even that light has to pass through the atmosphere. For you to see Jupiter, the light coming from the Jupiter should also pass through the atmosphere only, right? Why this will not undergo refraction? Every light, when it passes through the atmosphere, it undergoes refraction. Okay, every light undergoes refraction. But when a light coming from a point source is just a single point. When a light comes from a point source and it passes through the atmosphere, it undergoes easy refraction. इतना easily refraction हो जाएगा, हमें बहुत clearly दिख सकते हैं. It becomes visible. To the naked eyes, you can see the refraction happening. Refraction क्या है? Changing the path. ऐसे scatter होके ऐसे ऐसे आता है ना. Point source में जो आएगा तो बहुत हल्का सा light है. Very very faint light. Okay, that is what is point source. Single point से आ रहा है. ऐसे वाला लाइट अगर एटमॉस्फेयर से पास होगा तो डेफिनेटली बहुत इजीली रिफ्रैक्शन हो जाएगा. हाउएवर द लाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम ए नियर बाय प्लैनेट, ओके, सो दैट व्हेन इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, इट इज नॉट ए वेरी लाइट, मतलब इतना हल्का नहीं है, बहुत पास में है. इट्स ए हाई इंटेंसिटी लाइट. इसके अंदर भी रिफ्रैक्शन होगा. अगर एक पार्ट रिफ्रैक्शन हुआ तो दूसरा पार्ट उसके बगल में ही है, तो हमें पता भी नहीं चलता है. The refraction of the light coming from a nearby body is not very clearly visible, whereas the light coming from a far away point source becomes easily visible to the naked eyes. Okay, it's because of its point source. This is a point source. That is not a point source, right? The overall light which is coming from a nearby body is a very dense light. इसका सारा पार्ट तो एक ही टाइम में रिफ्रैक्शन नहीं होगा ना, तो वो एक पार्ट अगर रिफ्रैक्शन हुआ तो दूसरी पार्ट कॉम्पनसेट कर लेगा. इट्स हाई इंटेंसिटी लाइट. नियर बाय बॉडीज हायर इंटेंसिटी लाइट, नो इजी रिफ्रैक्शन. फार अवे बॉडीज पॉइंट सोर्स, सिंगल रे ऑफ लाइट, ओके, वेरी फेंट लाइट, easily undergoes refraction. That is why twinkling. It's because of its point source nature. So therefore, if you see any body beyond the atmosphere, there is no twinkling at all. Yes. If you go beyond the atmosphere, atmosphere छोड़ के बाहर जाओ. For example, moon से देखो. Do you see twinkling? No, because moon has no atmosphere or almost negligible atmosphere. वहाँ से twinkling नहीं होता है. कहीं से भी जाओ. Beyond the earth, you see anywhere beyond the atmosphere, you will not see twinkling. Twinkling नहीं होता है in the space. Okay. And what you are seeing is night time में जो दिखता है ना, वो खाली light है, actual body नहीं है वो. When you see a star, twinkle twinkle little star हम देखते हैं, that star is not actually the star. You're not seeing the body. What you're seeing is the light coming from the star. Many times it happens that the star has died. Supernova हो गया, black dwarf बन गया, star है ही नहीं. अभी भी light आ रहा है, क्योंकि तब निकला था, अभी आने में इतना टाइम लगा हुआ है ना. You are seeing the light, but there is no body behind it. Okay, so that is the idea. Many of the night sky bodies may not be existing at this moment. Okay, जो लाइट निकला था उनको आने में इतना millions of years लग जाता है कभी कभी. Okay, that's right. The stars are like literally there, like permanent. Right? हमें पता नहीं चलता है. We'll never get to know. इनमें से एक स्टार बहुत स्पेशल है. हाँ, ये इसका आंसर बताइए.
One of the PYQ. Speed of light is always same. Light always travels in straight line. ये गलत है, हमेशा सही नहीं है. Okay, so वही gravitational waves नहीं, नया evolving concept है. It's not necessary that it has to travel straight always. Gravity of stellar bodies does not change. Distance among the stellar bodies does not change. ये तो expanding universe के opposite चला गया. Speed of light is always same, 3 into 10 to the power 8 meter per second. हम कहीं किसी का भी स्पीड मेजर करना है तो वी नीड टू हैव दैट कांस्टेंट स्पीड, राइट? मतलब सॉरी, डिस्टेंस मेजर करना है तो कांस्टेंट स्पीड से मेजर करना है ना. दिस इज द फास्टेस्ट आल्सो. ठीक है. सो व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन? कॉन्स्टलेशन क्या होता है? एनी ग्रुप ऑफ स्टार्स. What kind of pattern? A recognizable pattern which is permanent. Permanent होना चाहिए, recognizable होना चाहिए. Okay, see, as the earth rotates, the position of all the different stars changes. As the earth revolves and as the sun moves around, position of बहुत सारा stars का position change हो जाता है. सारा star same position में throughout the year नहीं दिखता है. ठीक है. However, some stars, they, even though they, okay, so I'm not saying that their position remain fixed or their position there throughout the year, but जब भी दिखेगा वो साथ में दिखता है. स्टार्स के अपने बीच में रिलेटिव पोजीशन चेंज होगा, बट सम स्टार्स आर लोकेटेड इन सच ए मैनर दैट अपने बीच में रिलेटिव पोजीशन हमेशा फिक्स रहता है, उनका पोजीशन चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 7 stars व्हिच वी कॉल इट एज बिग डिपर. जब भी ये देखे ये साथ में ही दिखता है, इसी पोजीशन में एग्जैक्टली इसी शेप में दिखेगा. वी सी इन एनी टाइम ऑफ द नाइट, एनी टाइम ऑफ द ईयर, अगर ये दिख रहा है तो साथ में 7 टुगेदर इन द एग्जैक्ट सेम पोजीशन. दैट इज व्हाट इज ए पैटर्न, a recognizable pattern which is almost permanent. Over a long period of time ये change हो सकता है because of expansion of universe, because of various other phenomena, but human time scale में ये change नहीं होगा. इसको बोलते हैं constellation. This is what is सप्तऋषि मंडल, Big Dipper और सप्तऋषि मंडल. Such kind of constellations are there many, okay, बहुत सारा है. In fact, we can use them to find direction. हमें पता है कौन सा कॉन्स्टलेशन किस टाइम में कहाँ पर दिखता है, किस डायरेक्शन में दिखेगा, सब बहुत ऑब्जर्व किया. ठीक है. इन दैट वन पर्टिकुलर यूज ऑफ दिस सप्तऋषि मंडल इज टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ पोल स्टार. नाउ टेल मी, व्हाट इज ए पोल स्टार? पोल स्टार इज ए स्टार which is aligned exactly with the axis of rotation of Earth. एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर अलाइंड होके बैठ गया, एग्जैक्टली उसी जगह में है. यू कैन फाइंड एनी स्टार एज अर्थ रोटेट्स, उसका रिलेटिव पोजीशन तो चेंज होगा ना. ओके, सो इमेजिन, इस चेयर को इमेजिन कर लो. ओके, फ्रॉम हियर यू आर ट्राइंग टू सी ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स यू आर ट्राइंग टू सी. इस पॉइंट को इस जगह में जब दिखेगा ऐसे दिखेगा. जैसे अर्थ रोटेट हो गया उसके बाद में उसका पोजीशन तो चेंज हो गया ना. ओके, अभी यहाँ पर हम देख रहे हो, पहले यहाँ पर था, पूरा सीधा 90 डिग्री में दिख रहा था. आफ्टर सम फ्यू आवर्स वो 90 डिग्री नहीं, उसका पोजीशन चेंज हो गया. ओके, 60 डिग्री में आ गया, फिर 30 डिग्री में आ गया, फिर वो स्टार दिखेगा ही नहीं आफ्टर सम टाइम. कैन यू सी एवरी स्टार्स पोजीशन चेंजेस लाइक दिस. एज द अर्थ रोटेट्स द पोजीशन ऑफ एवरी स्टार गेट्स चेंज्ड एक्सेप्ट वन स्टार, the star which is located here. कि एग्जैक्टली ये जो एक्सिस के ऊपर जो एग्जैक्टली है ना, इसको कितना भी घुमाओ ये स्टार हमेशा वही फिक्स ही रहता है. अर्थ जितना भी रोटेट करो ये पोजीशन हमेशा फिक्स ही रहेगा ना. यहां से इसको देखना है तो ऐसे ऊपर
सर ऊपर करके देखो, यहाँ पर दिखेगा। यहाँ से आफ्टर फ्यू आवर्स सेम पोजीशन, आफ्टर फ्यू आवर्स सेम पोजीशन. You see this star in the entire night sky, its position will never change. All the stars change its position. Why? Because Earth rotates. Sun का position क्यों change होता है? Moon का position क्यों change होता है? Do you think sun is moving? Do you think moon is moving? Moon भी movement में है, but रात में इतना तेज तो नहीं घूमता है वो. Moon is fixed in the sky. Almost it is fixed in the sky. मून का पोजीशन ऐसे चेंज होगा क्योंकि अर्थ का पोजीशन ऐसे रोटेट होते जा रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ एवरी बॉडी इन द स्काई चेंजेस इट्स पोजीशन. द वे sun changes its position, the way moon changes its position, in the same way stars also change their positions. Every star changes its position except one star. एक स्टार है नाइट स्काई में, उसका पोजीशन चेंज होगा ही नहीं, पूरा रात भर वहीं पे फिक्स ही रहता है. अब चाहिए तो ऑब्जर्व करो, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में एग्जैक्टली वहीं पे ही रहता है. वो है पोल स्टार. वो कैसे रहता है? बिकॉज इट इज ओरिएंटेड विद द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. समझ आया ना? A star which is aligned with the Earth's axis of rotation is called as pole star. Right? So I said the direction at which you see this star is always the same. जहां पर वो स्टार दिखेगा वो वहीं पे ही होगा पूरा रात भर. द एंटायर नाइट यू विल सी द स्टार इन द सेम पोजीशन. इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन. हाउएवर at what angle you see that star, that depends upon your latitude. If you are located exactly at 90 degree, you will see this star here. 90 degree में दिखेगा. If you are located okay, so मान लो ये यार this is the position I'm saying. If you're trying to see this star from here, ये हमेशा 90 डिग्री में ही दिखेगा. इतना जितना भी घुमाओ पूरा रात भर हमेशा इसी पोजीशन में दिखेगा, 90 डिग्रीज में ही दिखेगा. If you try to see the star from here at 60 degree north, 60 डिग्री नॉर्थ में कौन से एंगल में दिखेगा? 90 तो ये है, ये हो गया 60 डिग्री नॉर्थ. You try to see this star from here, this is 90 degree. From here, this is 60 degree. From here, this is 30 degree. From equator, 0 degrees. The angle at which you see a pole star always depends upon the latitude. At 90 degree poles, it is visible at 90 degree. At 0 degree equator, it is at 0 degree. In between, the angle decreases. Of course, you cannot see it at 0 degree. वो दिखता नहीं. You can never see it at 0 degree. Because near to the horizon, the sky is very bright. नहीं दिखता है. It has slightly above. थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए. The angle at which you see the pole star changes from one latitude to another. But in that latitude, in the entire night, its position is fixed. मान लो हम 30 डिग्री में खड़े हैं. Okay, let's say this is 30 degree north latitude. Okay, so 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आपको पोल स्टार दिखेगा 30 डिग्रीज में. At 30 degrees you will see pole star. ठीक है, पूरा रात भर उसी जगह में दिखेगा आपको. Pole star will not change its position. 30 degrees में ही दिखेगा. Okay, if you are standing at 60 degree, you will see at 60 degree. If you are standing at 90 degree, you will see at 90 degree. The position of the pole star never changes in the entire night. Pole star gives you the direction of north. We use this to find the direction on the surface of Earth. क्योंकि नॉर्थ पोल के ऊपर है ना. So अगर पोल स्टार यहाँ पर दिख रहा है, how will you find the direction of north? Imagine the shortest line connecting that star and the surface. उस पॉइंट को नॉर्थ बोलेंगे. Okay, अगर वो नॉर्थ है तो ये साउथ हो गया, फिर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. Okay, that is how you find the direction. You can use the position of pole star to identify the direction in the night sky. But how will you identify the pole star?
इतना easy तो नहीं है. You cannot see whether a star is moving or not. It is practically impossible. Use the help of Big Dipper. The top two stars. Imagine a line connecting these two stars. Okay, ये जो स्टार है ना उसको इमेजिन कर लो, दोनों साइड से एक्सटेंड करो. Okay, extend this continuously. In between you will find many stars. इसके ऊपर बहुत सारे स्टार हो सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे स्टार्स एक ही लाइन में आ जाएगा. In that the brightest star is the pole star. In that entire line, imaginary line, the brightest star is always the pole star. You have to imagine, मतलब इस दोनों को कनेक्ट करते हुए एक लाइन इमेजिन करना है, पीछे भी आगे भी. The brightest star is the pole star. If you have doubt, you wait for some time. थोड़ी देर के लिए wait करो. The position of Big Dipper will change. After some time, Big Dipper will come here all together. That is what is a constellation, right? Big Dipper after some time it will come here. रात में उसको position change हो जाएगा. But फिर भी यहाँ से भी ये ऐसा ही. Can you see? It still forms a straight line. Using the help of Big Dipper, you can identify the position of pole star. In fact, because of the rotation of the earth, all the stars appear to be moving around the pole star. ऐसे दिखता है. Only the pole star remain fixed. ये है pole star center में. However, this facility is available only in the northern hemisphere because Earth has two pole stars. ये नहीं पता है क्या? The pole star which is present here is what is called as Polaris. The southern hemisphere, there is another pole star which is called as Sigma Octantis. दो पोल है, दो पोल स्टार होना चाहिए. What is a pole star? A star which is aligned with the poles. क्योंकि ये तो हमने बनाया है ना, हमारे लिए ये पोल स्टार है, उसको थोड़ी पता है पोल स्टार. ठीक है. So it is just a star which is aligned with the Earth's poles. And as per the Milankovitch cycle, the position of these poles will also vary. फिर स्टार ही चेंज हो जाएगा, पोल स्टार ही चेंज हो जाएगा. Take a long period of time. Humanities के टाइम पीरियड में Polaris, the North Pole star, Sigma Octantis is the South Pole star. North Pole में Polaris को आइडेंटिफाई करना है तो आपका Big Dipper will be helpful. South Pole star में कोई भी ऐसे शॉर्टकट नहीं है. In fact, South Pole star is not even bright also. Okay, Polaris is very bright. You can identify it. On a clear day, you can see it from Delhi also. Which happens like very few days in a year. अभी तो कोशिश भी मत करो. So basically, you're lost somewhere. You want to find the direction. You can use pole star, but you have to be lost in the northern hemisphere. If you're lost in the southern hemisphere, there is no way to find out the direction. Because ये तो इक्वेटर तक ही दिखेगा ना, उसके बाद में तो नहीं दिख सकते. साउथ पोल स्टार उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, वहां पर तो ढूंढना बहुत मुश्किल है. दिस वाज ए पीवाईक्यू आस्क्ड. What is the answer? So a person stood alone in a desert on a dark night, wanted to reach his village, which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing. He had no instruments to find the direction, but he located pole star. The most convenient way now to reach his village is, okay, अगर ये pole star उसको मिल गया,
Okay, so let's say this is his point. इसका मतलब है this is north, this is south, this is east, and this is west. Direction पता कर लिया. He also knows that his village is located 5 kilometer to the east. यहाँ से 5 kilometer east है. Okay, you travel 5 kilometer, you will reach his village. Now from here, going towards the village, in which direction he has to walk? Direction facing the pole star, he will go here. Direction opposite the pole star, he go here. Direction keeping pole star to his right. इसका मतलब he is traveling is like this and pole star is towards the right. Okay, तो ये तो opposite direction में चला जाएगा. Direction keeping the pole star towards the left. That is the most convenient way. ऐसे भी जा सकते हो. ये तो पूरा ऐसे घूम के आना पड़ेगा, अर्थ को घूम के आना पड़ेगा. That is why it is not a convenient way. The most convenient way is to keep the pole star to the left. Okay? That is about stars and galaxies. Solar system. Let's talk about solar system. We've given you already a rough idea how big the solar system is. Solar system तो बहुत बड़ा सा area. It is a planetary system around the sun. अगर मास के हिसाब से आप represent करना है solar system को, you will not find anything other than sun. sun के अलावा जो भी leftover matter है solar system, it is negligible. 99% से ज्यादा मास सन के अंदर ही है. Okay, so more than 99% of the mass of solar system is inside the sun. It is just the residual matter. Residual matter बन गया सारा planets. उसका residual matter है हम सब. Okay, Earth is just one of the very very low. इतना रेसिडियल में रेसिडियल है अर्थ, उसके अंदर रेसिडियल मैटर है हम. अदरवाइज इट्स बेसिकली द स्टार ओनली. व्हाट वी सी इन द नाइट स्काई, इतने सारे स्टार्स दिखते हैं, उसके अराउंड प्लैनेट दिखता है? नहीं दिखता. सब तो नेग्लिजिबल मैटर है. फिर भी इफ एट ऑल आई हैव टू से सोलर सिस्टम, व्हाट ऑल इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या है? मेन इज सन. अदर देन सन 9 planets. 9 planets और 8 planets. That depends upon the definition. पहले 9 बोल रहे थे, अभी 8 बोल रहे हैं, आगे जाके और कुछ बोल सकते हैं. ठीक. So right now the number of planets as per International Astronomical Union is 8. ठीक है. Other than planets, there are small bodies which we call it as dwarf planet. Chota planets. How many chota planets are there? Dwarf planets? 5. 5 dwarf planets are there. Pluto is one among them. ठीक है? And फिर आते हैं satellites. Satellites are also very big sized. Some of the satellites are much bigger than these dwarf planets. Pluto से बड़ा सा satellites भी है. Okay, so बहुत सारा है. But since they are revolving around another planet, they are called as satellites. Okay, so planets, dwarf planets, satellites. फिर आते हैं asteroids. Leftover matter, rocky matter, they are called as asteroids. Okay, so leftover gaseous frozen matter which is there in the outer part of the solar system, occasionally it comes out, that is what is comet. बाकी सारा debris material. Okay, leftover debris material, gaseous, frozen elements like that. Galactic dust, galactic debris like that. हाँ? वो asteroids ही है. सारा asteroids ही है. सारा मिला के हम बोलेंगे इसको solar system. ठीक है? How this solar system originated? What are the various theories to explain the origin of solar system? All the theories which tries to explain the origin of solar system, they are classified into 2 groups. One is evolutionary theory, another one is catastrophic theories.
evolutionary theories and catastrophic theories. What does evolutionary theories say? Evolutionary theory says that the entire system evolved together. What is evolved? Evolution का मतलब क्या है? Stage by stage changes. Okay, stage by stage gradually change होते जाएगा, तो finally वो step by step change होते होते एक system बनेगा. That is what is evolutionary theory. Evolutionary theory believes that there was a single gaseous cloud. From this single gaseous cloud, over a long period of time, changes happened, and at the center, the sun was evolved. Around the center, the planets evolved. Stage by stage, होके. इसका मतलब है the sun and the planets, both of them are from the same cloud, same process, same time, same age. सब same system का ही process है, साथ साथ में evolve होके आया है. The age of the sun and the planets both are same. That is what is evolutionary. Evolve हुआ है, साथ में evolve हुआ है. Catastrophic, accidental. Okay, कुछ accident हुआ है, catastrophe हुआ है, उसके वजह से ये बन गया. Catastrophic theory says that sun evolved first. पहले sun बन गया था. sun बनने के बाद में sun गलती से कोई accident हो गया था, जिसके वजह से some of the matter from the sun will come out and that become planets. Okay, that is what is catastrophic. Major theories, evolutionary theories, catastrophic theories. What are the differences between them? Evolutionary theories believe that the age of sun and planets both are same. Catastrophic theories believe that sun is older than the planets. Evolutionary theories, stage by stage gradual changes. Catastrophic theory, sudden change, sudden accident, जिसके वजह से planets आ गया. सो इम्पॉर्टेंट थियरीज उसका कौन प्रपोज किया है, ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, याद रख लो. कैटास्ट्रोफिक थियरी, टू इंपॉर्टेंट कैटास्ट्रोफिक थियरी. वन इज प्लैनेटेसिमल थियरी प्रपोज्ड बाय चेम्बरलिन एंड माउल्टन. Chamberlain and Moulton proposed planetesimal theory. Tidal hypothesis was proposed by Jeans and Jeffrey. Tidal hypothesis was proposed by Jeans and Jeffrey. सो बेसिक आइडिया देखो, रफ आइडिया समझ लो, इतना डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं आए, फिर भी दोनों के हिसाब से कैटास्ट्रोफिक थ्योरी क्या बोलता है. प्लैनेटेसिमल थ्योरी सेज दैट देयर वाज अ सन एंड देयर वाज अनदर स्टार नेक्स्ट टू इट. ओके, सो बोथ कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज में क्या होता है, दे बिलीव इन बाइनरी स्टार सिस्टम. व्हाट इज बाइनरी स्टार सिस्टम? देयरफॉर देयर कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज आर आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी थ्योरीज. उसको बाइनरी थ्योरीज बोलते हैं. व्हाट इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम? टू स्टार्स एग्जिस्टिंग टुगेदर, दो साथ में रहते हैं. ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है. जैसे सोलर सिस्टम के सेंटर में एक स्टार है ना, उसके बदले दो स्टार होगा, ऐसे उसको बोलते हैं बाइनरी स्टार. So catastrophic theories believes that sun was also part of binary star system earlier. There was, along with the sun, there was a massive star. एक और massive star था. And
by some mistake, when they are moving, the massive star comes very close to the sun. इसके लिए बहुत पास में आ गया. The gravitational pull of this massive star will cause the mass from the sun to get ejected. इतना gravitational pull है ना, वो ऐसे gravity की वजह से वो mass को बाहर खींचता है. And this mass will come out. And but this star will gradually move away. As this star moves away, this mass will also get pulled in that direction. And as it moves away further, it starts to revolve around the sun. ये जो mass है gradually इसके around revolve होना शुरू हो जाता है. And during that process, since it has come out of the sun, temperature has decreased. This mass will start to condense into small bodies. These small bodies are called as planetesimals. These planetesimals will combine together, they merge together to become big planets. Planetesimal banega. Planetesimal is like a protoplanet. They merge together to become big planets. टाइडल हाइपोथेसिस भी ऑलमोस्ट सेम ही है. वहाँ पर भी मैसिव स्टार है, पास में आ जाएगा, बट जो मास एजेक्ट होता है ना, वो एक बड़ा सा टाइड जैसे निकल के आएगा. द मास विल कम आउट लाइक ए ह्यूज टाइड. उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग डिस्क्राइब करता है, तो उतना डिटेल में नहीं चाहिए. फिर वो कंडेंस होकर प्लैनेट्स बन जाएगा. दिस व्हाट इज कैटास्ट्रोफिक थ्योरी. Evolutionary theory, there are two important evolutionary theories. The earliest, the oldest of all the theories is gaseous hypothesis given by Immanuel Kant. Okay, उसका advanced version है nebular hypothesis given by Laplace. Okay, so you don't have to go in details of gaseous hypothesis. Nebular hypothesis याद रख लो roughly. Nebular hypothesis believed that there was a spinning gaseous cloud. Okay, पहले gaseous cloud था, हमने origin of star में भी देखा था ना, there was a gaseous cloud. That spinning gaseous cloud is what is called as, उसका नाम क्या है? Nebula. The spinning gaseous cloud is what is called as nebula. So nebula is continuously spinning. Spin होते जा रहा है. As nebula is spinning, you know, nebula will start to contract. ये contract होते जाएगा. Why? Because the heat is continuously being lost. The heat generate होते जा रहा है ना, वो continuously lose होते जाएगा, क्योंकि निकल जाएगा ना, heat निकलते जाएगा. Heat कम हुआ तो क्या होगा? The matter will start to condense. जैसे जैसे contract होने लगेगा, because of the density, because of the increase in the density, nebula will start to spin faster. Nebula will start to spin faster. जैसे वो fast spin करना शुरू हो गया, because of the centrifugal force, you know, centrifugal force, the force is just trying to push things away, and that is experienced maximum along the equator. Equator के पास में तो ऐसे force लगता है ना. अगर ये nebula ऐसे spin होते जा रहे हैं, contract होते जा रहे हैं, वो contraction की वजह से mass dense होते जाएगा ना, जिसकी वजह से along the equator the mass gets thrown away. Gradually ये ऐसे contract होके ऐसे disk हो जाएगा, because here the matter is getting thrown away due to centrifugal force. Gradually nebula will contract to become a flat disk. देखो वहां से वो disk बन गया. Okay, first image से देखो, second image, disk बन गया. Flat disk with bulge at the center. Center the mass is very very high. There the temperature reaches 15 million degrees Celsius. There the sun is born. From the surrounding area of this, ये जो disk है ना, वहां पर जैसे disk continuously घूमेगा, because of the centrifugal force, the rings of matter will get thrown away. In multiple rings, the matter will get thrown away. Okay, consecutively. एक ring, दो ring, तीन ring ऐसे. Multiple rings of matter will get thrown away. Gradually, it expands. Okay, so center में जो है bulge ऐसे बन के star बन गया. Now the rings of matter getting thrown away expands to much larger area. And this matter, as it came out from the center, the temperature is very very low. Temperature कम होते गया, तो cool down होगा, condense होगा, and it starts to accumulate together. Within this, you will find the formation of small bodies. ऐसे बहुत छोटा bodies ऐसे बनते जाएगा. And they, of course, they are colliding with each other. A bigger body always attracts the smaller one merges with the bigger one.
the bigger one becomes much more bigger. पूरे period of time ये सारा merge होके और बड़ा सा बन जाएगा. Okay, so each of the ring you will see the formation of big sized bodies ऐसे. फिर वो भी मर्ज होगा. ग्रेजुअली हर रिंग में एक ही बॉडी बचेगा. In every ring, the entire matter will condense together to form one big planet. Like in the end, in each of the ring, only one planet will be left. If at all, in the ring, there is any matter, small bodies, they are located at such a distance that they are neither able to go away, not able to fall towards the planet. Their motion is exactly balanced. Their motion around the planet is balanced by the gravity. Then that body becomes a satellite. फिर इसके अराउंड सराउंडिंग में घूमना शुरू कर लेते हैं. Okay, so within the ring, there are either the bodies, whatever the bodies that are left is either they collide with the planet or they move away. जो दोनों नहीं करेगा exactly बीच में फंस जाएगा ना, तो वो बन जाता है सैटेलाइट. Finally, around the sun, only the planets and satellites will be left. जब planets and satellites बन गया, एक बीच में एक जगह ऐसे हो जाते हैं जो लेफ्ट ओवर मैटर का एक रिंग बच जाता है. वो पूरा रिंग नहीं है, ऐसे डेब्रिस बच गया. वो है हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट. एस्ट्रॉइड बेल्ट इज अ बेल्ट ऑफ लेफ्ट ओवर मटेरियल. ठीक है, सो मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ. ऑफकोर्स नेबुलर हाइपोथेसिस तो ये सब तो नहीं बताता है. Nebular hypothesis says that there was a spinning nebula. It contracts to become disk. Disks say rings of matter will get ejected. Within the ring, the matter will condense to become planets. Okay, so इसके बीच में बन गया एस्ट्रॉइड बेल्ट. जो लेफ्ट ओवर मटेरियल था वो ऐसे डिस्टेंस में है, ये सन के तरफ में भी नहीं जा सकते, इस तरफ में भी नहीं जा सकते, बिकॉज दीज आर द हैवी प्लानिटरी बॉडीज. इसका पुल बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटी ज़्यादा है इसका, सन की तरफ में भी ज़्यादा है. बीच में ये सेंटर में अटक गया, वो है एस्ट्रॉइड बेल्ट. कि ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, पूरा सिस्टम ऐसा ही था पहले. पूरा सिस्टम ऐसा ही था, सब आपस में मर्ज होके कोलाइड होके ऐसे प्लैनेट्स बन गया फाइनली. ये लेफ्ट ओवर मैटर है. दिस व्हाट इज एस्ट्रॉइड बेल्ट. ऐसा वाला बेल्ट प्लूटो के पीछे भी है. द लेफ्ट ओवर मटेरियल इज देयर बिहाइंड द प्लूटो ऑल्सो. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्यूपर बेल्ट. द लेफ्ट ओवर मटेरियल बिहाइंड द प्लूटो इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्यूपर बेल्ट. एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, दूसरा क्यूपर बेल्ट है. उसके भी पीछे एक क्लाउड है. ये बेल्ट तो ऐसे डिस्क शेप में, ऑफ कोर्स ये डिस्क से ही आता है ये सारा. दैट इज वे ऑल द प्लैनेट्स का जो ऑर्बिटल प्लेन है ना, ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ऊपर नीचे होगा, बट सबको मिला दो एक डिस्क मिलेगा आपको. दैट इज द प्रूफ दैट नेबुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू. ओके, नेबुलर हाइपोथेसिस वाइडली एक्सेप्टेड इसलिए कि पूरा आप मिला दो, सारा एक ही ऐसा डिस्क शेप है, आप इमेजिन कर सकते हो. Okay, it's not like sun ऐसे है, कुछ planet ऐसे घूम रहे, कुछ planet ऐसे घूम रहे, ऐसे तो नहीं है ना. All the planets roughly they have the same orbital plane. ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ऐसे एक disk shape बनेगा. That is one of the evidence to prove the nebular hypothesis. Other than that, any other evidence to prove the nebular hypothesis? All the planets move around the sun in anti-clockwise direction only. Revolution is always anti-clockwise, because that was the direction in which this nebula was spinning. वो डिस्क उसी डायरेक्शन में घूम रहा था, उसी की वजह से वो प्लैनेट्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. उसी मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ द ओरिजिनल नेबुला इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज प्लैनेट्स. क्योंकि ये सारा बेल्ट में है, एंड अराउंड द all of this belt completely in all the 360 degrees of direction there is a cloud of leftover debris. That is what is called as Oort cloud. ORT, Oort cloud. ये है हमारा सोलर सिस्टम. Let's talk about the sun. Sun is a dwarf star. How old is sun? 4.6 billion years.
that is the age of sun, and according to nebular hypothesis that is also the age of entire solar system. All the planets, they are of same age. Earth ka bhi age 4.6 billion years. And as I told you, 99% of the mass of solar system is sun only, and sun is a dwarf star. After 7 billion years it will become a red giant बन जाएगा. सुपरनोवा तो नहीं होगा हमारा सन, ब्लैक डॉर्फ बनेगा फाइनली. The sun is made up of total of 3 layers in the interior, 3 layers in the atmosphere. Sun का भी atmosphere है. There are 3 layers in the interior, 3 layers in the atmosphere. What are the interior layers? The innermost layer is what is called as core. सबसे innermost layer है core. It is core where the nuclear fusion reaction is happening. जिसके वजह से ये स्टार, हमने इसको स्टार बुलाते हैं ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वो खाली कोर में ही होगा. सो देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द कोर शुड बी कितना होना चाहिए? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, तभी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा. Beyond the core there is a next zone, second zone, which is called as radiative zone. Radiative zone radiates the energy. Radiates मतलब खाली energy coming out in its original form, radiation form में ही बाहर निकल के आता है. Mass will not move here. Okay, energy comes out in radiations, radiative. The third zone is convection zone. Convection. What do you mean by convection? Vertically upward movement of mass is called as convection. यहां पर जो mass है ना, continuously rise होगा ऐसे. By absorbing the heat from this second zone, this mass rises up. Once it comes near to the surface, this will release the heat and mass will go down again. Again absorbs heat, again comes up, again goes down. Like this, continuous currents of convection is there inside. इसके अंदर currents of convection is there, जिसके वजह से heat is continuously being released. Heat continuously release होते जा रहे. Therefore, it is called as convection zone. The first layer of the sun's atmosphere is called as photosphere. Sun का जो surface के ऊपर का जो सबसे पहले layer है ना, it's called as photosphere. It is the brightest layer of the sun. सबसे brightest layer तो photosphere है. Brightest layer of the sun. It is from this layer only visible light comes out. जो visible light component है electromagnetic radiation का, वो यहीं से आता है, जिसकी वजह से visibility हमें होता है. Okay, we get visibility from the photosphere. The temperature of the photosphere is nearly 5500 degrees Celsius. जब हम सन को देखते हैं ना, हम कौन सी लेयर को देखते हैं? फोटोस्फीयर. बाकी लेयर्स नहीं दिखता है. ठीक है, वी सी ओनली फोटोस्फीयर. फोटोस्फीयर इज सो ब्राइट दैट इसके फोटोस्फीयर के आगे 2 लेयर है, वो दिखेगा ही नहीं हमें. फोटोस्फीयर के पीछे 3 लेयर है, वो भी नहीं दिखेगा, खाली फोटोस्फीयर दिखता है. सेकेंड वन इज क्रोमोस्फीयर. क्रोमो मीन्स कलर. This is the second layer of the sun's atmosphere which releases colorful lights. ये कलर दिखता है, रेडिश ऑरेंजिश दिखता है. बट फोटोस्फीयर इतना ब्राइट है तो उसके सामने तो ये नहीं दिखेगा. The last layer is corona. Yes, इसका नाम भी कोरोना ही है, बट ये ओरिजिनल है, ये पुराना है. It is because of the crown-like structure. इसी के नाम से इसका नाम कोरोना है. The crown-like structure. Outermost layer. You want to see photosphere and chromosphere and corona, you have to block the photosphere. That happens during total solar eclipse. During total solar eclipse, you can see chromosphere and corona like this. Okay, ये पूरा ब्लॉक हो गया. यहाँ पर जो रेड कलर दिख रहा है ना, that is what is chromosphere. बाहर का जो लेयर है ये है कोरोना.
but corona is mysterious. That's because its temperature, the photosphere temperature was 5500 degrees Celsius. Okay, so center में था 15 million, surface में आ गया 5500, but by the time you come to corona it should have been much lesser. It has increased. It has increased to 2 million degrees Celsius. The temperature of the corona is 2 million degrees Celsius. The reason behind this is still unknown. अभी भी पता नहीं है क्यों ऐसा इतना हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर. Photosphere के ऊपर there are certain black spots you observe, dark spots you observe. What do we call them as? Sunspots. Sunspots क्या होता है? What are sunspots? Sunspots are the dark spots on photosphere. Dark because the temperature is slightly lower. 5500 already कम है, उससे भी कम हो जाएगा यहाँ पर. Around 3200 degrees Celsius रहता है. These dark spots are called as sunspots. But only it is the temperature which is lower. बट यहाँ पर एनर्जी और ज़्यादा रहता है, मैग्नेटिक एक्टिविटी ज़्यादा रहता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहता है यहाँ पर. ओके, सो यू नो समटाइम्स मैग्नेटिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर थ्रोन फ्रॉम दिस पार्ट, जिसकी वजह से कोरोना से भी मास इजेक्शन होता है, कोरोनल मास इजेक्शन. ओके, सो इट्स बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज ओनली. एंड दीज नंबर ऑफ सनस्पॉट्स दे आर नॉट फिक्स्ड, दे कंटिन्यूसली वेरी ऑन द सरफेस. ऐसे नहीं है कि ये हमेशा फिक्स रहता है, उनका पोजिशन भी चेंज होगा, नंबर्स भी वेरी होगा. The number and position of the sunspots vary continuously. उनका पोजिशन कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है. You observe sun at any point of time. अगर थोड़ा बहुत टेलीस्कोप लेके अच्छा सा फिल्टर लगा के देखा तो आपको बहुत क्लियरली दिखता है सनस्पॉट्स. There is a cycle called a sunspot cycle, where you can use a graph to understand the sunspot cycle. This graph indicates the number of sunspots over time. Over time, the number of sunspots is continuously increasing, reaches the maximum and then continuously decreases, and then again continuously increases, continuously decreases. एक टाइम में देखो सनस्पॉट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, हर महीने ऑब्जर्व करना कोशिश करके मतलब ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सी डायरेक्टली, यू नीड टेलीस्कोप. Okay, if you try to see the sunspots, they're increasing every month, every year, continuously वो increase होते जा रहे हैं. एक पोजीशन में मैक्सिमम सनस्पॉट्स आपको दिखता है, मैक्सिमम डार्क स्पॉट्स, दैट इज व्हाट इज सोलर मैक्सिमा. उस पोजीशन को बोलते हैं सोलर मैक्सिमा. फिर वहां से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, नंबर ऑफ सनस्पॉट्स विल ग्रेजुअली डिक्लाइन एंड रीचेस द सोलर मिनिमा. फिर दोबारा इंक्रीज होना शुरू होगा, सोलर मैक्सिमा एंड अगेन सोलर मिनिमा, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस डिक्रीजेस. Between one minima to another minima or one maxima to another maxima is one solar cycle. One solar cycle is over a period of 11 years. 11 years में एक सोलर साइकिल होता है. लास्ट सोलर साइकिल हुआ था 2014 में, मतलब लास्ट सोलर मैक्सिमा हुआ था 2014 में. 2025 is the next solar maxima. We are almost near to the solar maxima. क्या होता है सोलर मैक्सिमा में? मैक्सिमम नंबर ऑफ सनस्पॉट्स, हाईएस्ट एक्टिविटी फ्रॉम द सन. जब एक्टिविटी ज्यादा होगा क्या होगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स आर गेटिंग थ्रोन इनटू द स्पेस. सोलर स्टॉर्म्स आता है. व्हाट आर सोलर स्टॉर्म्स? ह्यूज एनर्जी पार्टिकल्स आर गेटिंग थ्रोन इनटू द स्पेस. नॉर्मली जो निकलता है वो सोलर फ्लेयर है. दिस इज सोलर फ्लेयर. ओके, आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज सोलर फ्लेयर. ओके, सो वेरी बिग साइज सोलर फ्लेयर इज कॉल्ड एज सोलर storm. Huge magnetically electrically charged particles are thrown into the space. जब एक्टिविटी ज्यादा होगा ये तो होगा, वो होगा मैक्सिमम सोलर मैक्सिमा के पास में. That is why in 2024 we are observing a very frequent occurrence of aurora. Okay, so aurora usually polar regions में होता है. जब ये चार्ज पार्टिकल आके अर्थ के एटमॉस्फेयर में फंस जाता है ना, उसकी वजह से अरोरा होगा. पोलर रीजन्स के पास में यूजुअली होता है. ठीक है,
बट ये बहुत ज़्यादा जब निकल के आते हैं, ए ह्यूज स्टॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कम आउट, देयर प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर बिकम्स टू हाई, दैट प्रोड्यूसेस अरोरा टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट. खाली पोलर रीजन्स में क्यों होता है अरोरा? मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जो है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बाकी जगह में वो ब्लॉक कर लेते हैं. पोलर रीजन्स में थोड़ा सा वीक है तो वहां पर ब्लॉक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से खाली पोलर रीजन्स में अरोरा दिखेगा आपको. ज्यादा पार्टिकल्स आ गया तो ज्यादा दिखेगा. वही अरोरा बहुत नीचे तक पहुंच जाएगा, लोअर लैटिट्यूड्स में भी हो जाएगा, जैसे स्पेन में हुआ था, यूएसए में हुआ था. इन दिस ईयर 2024 वी ऑब्जर्व द लार्जेस्ट सोलर स्टॉर्म इन द लास्ट 20 years. इन द लास्ट 20 years 2003 या 2002 में हुआ था हॉलोवीन स्टॉर्म. हॉलोवीन के टाइम में हुआ था, हॉलोवीन स्टॉर्म बोलते हैं इसको. वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर स्टॉर्म्स ऑफ रिसेंट टाइम्स. उसके बाद में 2024 में हुआ है, जिसकी वजह से अरोरा वाज वेरी क्लियरली विजिबल, नॉट ओनली इन यूएसए एंड यूरोप, इट वाज विजिबल इवन इन लद्दाख ऑल्सो. लद्दाख में दिखा था इस बार, मतलब बहुत फाइंट रेड कलर में दिखा था. इट्स बिकॉज ऑफ दिस सोलर स्टॉर्म्स व्हिच आर हैपनिंग. सोलर मैक्सिमा के पास में है ना हम, the entire sun is almost near to the solar maxima, that's why. ठीक है, स्टॉप हियर. स्पीड ठीक है या और फास्ट कर सकते हैं? बताओ, बताना है आपको. कर सकते हैं स्पीड, कर सकते हैं या नहीं? नहीं है तो वो भी बताओ. किसके लिए स्पीड कर सकते हैं बताइए. यू कैन राइज योर हैंड, ऑनेस्टली बताओ, इसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, बाकी लोगों के लिए यही स्पीड ठीक है. यस, स्लो डाउन करना है. ठीक है, ठीक है. चलो, सो नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा और बचा है. सोलर सिस्टम का प्लैनेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे, देन विल स्टार्ट विद जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है, थैंक यू.